So Namaskar, good evening, welcome to Divine Healing Valley, Spirituality and Healing Meet. Today is Wednesday and we are back with the Wednesday session. In the last week, we had talked about Yoga Vasishtha wisdom. And we are going to do a quick recap of what we covered in the last session. And today we are going to build up on that with the discussion on Purusharth. So Purusharth ka kya mahatva hai? That is a topic, subtopic rather, that we are going to see. So first, let us have a quick recap. What all did you learn from the last session? Recap मैं नहीं करूंगा, आप लोग बताएंगे तो क्या क्या points आपको याद हैं पिछले week से, and if there is any gap, I will cover it up. So, what did we learn from the last week's session? Just to give you a background of the recap, it is a discussion between Prince Ram and Brahmarishi Vasishtha, compiled by Valmiki ji, and that is the book of Yoga Vasishtha. So we're going to look at the wisdom of that Yoga Vasishtha, and we started off by seeing what is the path, or what is the highest or the most powerful way to attain self-realization, the truth, salvation, complete freedom. And the answer was ignorance is the problem and Gyan or wisdom is the solution to it. So Gyan Yoga is suggested as the highest or the best solution to attain self-realization. So that is the discussion that we were on to. And then we saw if the Gyan Yoga doesn't fit, that is because the mind is impure. Yes. And then we saw three major points which we discussed in the last session. What were the three major points? One was relating to Karma Yoga, and that is what we are going to discuss today in detail. What was that one word which Brahmarishi Vasishtha is teaching Prince Ram? What is the first word that we saw in the last session? Karma Yoga के साथ कौन सा word था? Hello. Service. Who are the people paying attention? Yes. What is the word? Service. No. I want that particular word which we discussed. It's not service. It's not service. Karma Yoga के साथ हमने क्या बोला था? Because we are going to highlight that word in this week, in this session. Dan. People forgot, right? We talked of Dan. So Dan is synonym of the karma that we do. So कर्म योग के लिए एक वर्ड था जो योग वैशिष्ट में बताया गया है, which is दान. Correct? Then for bhakti yoga we had one word which we discussed, and that was, what was that? Sorry. Believe. Surrender. Yeah, believe. Believe. No. One word which we discussed, which was synonym or particularly related to bhakti yoga. दान. Second word was होगा तो समर्पण. नहीं, समर्पण नहीं था सर. Second word was तीर्थ, which was discussed, right? First is dan, which means giving, and that purifies your desires and is the fundamental of karma yoga. Second is tirth, which is synonym of bhakti, devotion, and that fills your heart with love. Correct? Then of course devotion comes, and जो भी आपने बताया समर्पण आ जाएगा उसमें, and surrender to divine. So ego will be neutralized, or ego will be dissolved into that. Very good. And third is दान, उसके बाद तीर्थ. तीसरा वर्ड क्या था? Meditation. No. Meditation is of course one word. Yes, tapa. Who said that? Nivedita ji said that. Very good. She is a studious participant, so she remembers the point. Tapa means meditation. The word is tapa. शास्त्रों में जो बोला गया है योग वशिष्ठ के विजडम में वो है तप. So it is meditation. So it is concentrating the mind. Mind is concentrated, mind is pure, and now it is the foundation for the Brahma Gyan to come in. When you say you are divine, and that wisdom settles into the mind. Now remember the example of the swimming pool? So now the swimming pool is clear and the water is still,
and you can see the golden plate at the base of the swimming pool, which is synonym of the divine. So divine आसानी से दिख जाएगा उस mind में जो pure है और जो still है. That is why there is a statement also, be still and know that I am God. Yes, be still and know that you are God. So when you are still, the God or the godliness is reflected in your mind, and you can know you yourself as God. So these are the wisdom which you have to understand, and that will come when you are ready. You are ready means when your mind is ready. And as we saw, mind is the only barrier to self-realization, and mind is the only way to self-realization. Remember the words. So this is what we have done as a recap. We have done this, right? Today we are going to focus on Karma Yoga. And Karma Yoga, the word that we saw in the last session was Dhan. So let us have some elaborate discussion on Dhan first. So Dhan ka basic idea kya hai? What is the first understanding of Dhan, which we saw in the last session? Dhan se aap kya samajhte hain? Anybody can speak out. To give something. To give something. Very good. So Dhan is equivalent to giving. देना से दान आता है. No. जब आप कुछ देते हो, आप किसी को भी कुछ दे रहे हो, तो आप वहां से वर्ड आया दान. So दान is all about giving. Any other understanding? दान is equivalent to what? What is your understanding of दान? आप लाइफ में दान करते हो तो क्या करते हो? Last time we saw पैसा दान करना है. So you are giving money. After that, forget it. First, what is Help the दान? needy. First, help the needy. Okay, so दान is helping people. Yeah, helping people. You can do that with money. You can do that with food. You can do that with clothes. You can do that with your effort, your time, or simply by listening to somebody, you will be able to give a lot of comfort to people. So you have different ways of how you can provide love, peace to others, right? And some of the teachers, they are giving gyan, education. So you are giving education to people. That is also done. You are serving people. So doctors, teachers, nurses, right? Coaches, healers, they are giving. Anybody who is giving his services to someone is actually a provider. Now that brings us to the discussion of what is the highest level of dhan. This also we had discussed last time. So we saw there are 3 types of dhan which we differentiated: Sattvic dhan, Rajasic dhan, and Tamasic dhan. And the highest, of course, we all know is the Sattvic dhan, which is also called selfless, absolutely selfless giving. That is what Rajiv had discussed, and Sanjeev has mentioned that as Yoga dhan, correct? So full contribution in giving more without expecting any results, without any expectation of any returns. That is the Sattvic dhan. We saw this in the last session. Let's build on that. तो इसको हम बोलते हैं निष्काम सेवा या निष्काम दान. अगर हम करते हैं तो उसमें अपना नाम भी नहीं बताते हैं, गुप्त दान करते हैं लोग, अपना नाम भी नहीं, सामने आना ही नहीं है. So people don't know, anonymous giver, correct? Then you could be doing charity without expecting anything in return, right? तो basically ये इससे क्या होता है, आप अपने ईगो को बाईपास कर लेते हैं and you move forward on your spiritual journey. So anybody who wants to, who has a big ego in his life, he should first do dhan to look beyond his ego, because ego का एक ही language होता है ना, what is in it for me? And when you start giving, your voice is not clear, can't hear you, it's breaking. Okay, just hold on, it will be okay. So somebody else share, what is dhan? Sattvic dhan से क्या समझते हैं? Shashi can't hear you. Cannot Your hear, voice. sir. Okay. Sanjeev, is that okay now? Can you hear me? Sir, एक भी बात नहीं सुनाई Shashi दी. can't hear you, can't understand at all anything. No, I'm not saying anything right now. I'm just asking. We can't hear Sir, that also. वो भी नहीं सुन रहा.
तो कोई आप बोलो ना, आप में से कोई बोलो, यू गो हेड। अब आप बोलो, अब बताओ कि व्हाट इज हैपनिंग। अब आपने क्या पूछा, अब बोलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सात्विक ध्यान दान से क्या समझते हो? somebody share. If my voice is not coming, Sanjeev, you take over and share. Okay, yeah. Sure, sure, no worries. So So anyone who would like to share, what do you understand by the word dan as per you? सात्विक दान, राजसिक दान एंड तामसिक दान, क्या डिफरेंशिएशन है? दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग इनटू. कौन बोलना चाहेंगे? You are clear, Shashi, you are clear now. सर, आई एम क्लियर नाउ. दान सात्विक वही हो सकता है, सात्विक तो वही हो सकता है, दान जो पता ही ना हो, गुप्त दान को ही सात्विक कह सकते हैं, ओके, गुप्त चाहे वो दान को किसी भी सात्विक फॉर्म कह में सकते हो, हैं. और चाहे वो किसी भी फॉर्म में. रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ओके, वेरी गुड. रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो भी बिल्कुल सात्विक है. और सेल्फलेसली. सेल्फलेस. सर, एंड look into your life, what all do you are doing and how does it reflect? और क्या सात्विक दान और क्या हो सकते हैं? And to give without, I mean, to love it and do it, not because you're frightened and then you want to give. कई लोग डर के मारे भी चीजें देते हैं ना. हाँ, So तो do it out of love. yes, do it out of love, do it out of your positive emotion, not because अगर ये नहीं दिया तो किसी का श्राप लग जाएगा, हाँ, या भगवान रुष्ट हो जाएंगे, इसलिए भगवान को हर सोमवार को जाके या मंगलवार को जाके प्रसाद चढ़ाना है. हाँ, so you don't have to do that out of fear. Very good. So anything that you give, you have to first understand dan is all about giving. Giving to people, giving to animals, giving to all living beings. Right? उसमें अगर आप बिल्कुल सेल्फलेस हो जाते हो तो इसको हम बोलते हैं निष्काम, निष्काम दान, विच मीन्स सेल्फलेस, टोटली सेल्फलेस. ये सात्विक है. बट समटाइम्स यू विल बी गिविंग विथ एन इंटेंशन ऑफ सम डिजायर्स, विच इज ऑल्सो ओके. इसको हम सकाम बोलते हैं, विथ डिजायर्स. नाउ a doctor who is performing a surgery to save a life, is he not doing seva? Definitely he is doing seva. Does he charge his fees? Yes, he charges his fees. So this is sakam, nothing wrong in it. If you're running a school and if teachers are teaching the students, obviously they are getting their salary, right? Sakam hai, seva kar rahe hain, but sakam hai, with desire, with something in return. They are getting something in return. So taking something in return, maybe an expectation of some returns, is not bad. Only thing is you have to understand this is not nishkam, this is sakam, which is okay. Yes. But what is prohibited? What is prohibited? That is tamasic. So first, let us be very clear about sattvic is totally selfless. Rajasic is with desires. But again, it is very, very pure, so which is okay. But tamasic is return, which is very, very selfish. It can be absolutely to the level of, something being illegal or against the law. Correct? So that would be something like if you are giving your black money to an organization who is making bombs and associated with some terrorism. Now this is a totally tamasic activity, illegal. You're making a donation to an NGO who is involving in, you can say, smuggling or anything else. So you can understand the kind of activities which are going on, right? So these would be absolutely, though you are giving money, you're donating, but that is for that is very, very, very wicked cause. So that would be tamasic. So everybody clear on the three distinctions? And whenever you are giving, you will get the returns back. Definitely. And that will depend on the intention and the intent. That means the intention and the emotion rather. भाव और भावना बोलते हैं ना, तो भाव क्या है उसका, उसी के हिसाब से रिटर्न आएंगी, और जो भावना से दे रहे हो वैसे ही रिटर्न आएंगे. तो सबसे अच्छे रिटर्न किसके मिलेंगे आपको? सबसे अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे सात्विक दान के. सात्विक दान के, जिसमें मे बी यू इफ यू गिव 1 यूनिट यू विल गेट 1000 टाइम्स बैक. सात्विक दान है. राजसिक अगर होगा you will get maybe for 1 you will get as 100, right? So you have to understand it that way. Whenever you are giving, you will definitely get the returns, and that multiplication depends on your intention and your emotion. Clear hai ye? Any doubts on dan?
This is how you purify your desires and your karma and lay the foundation for higher spiritual journey. So Karma Yoga is based on giving, which is dhan. That is one word which is mentioned in Yoga Vasishtha. Any questions? Any questions? Clear है सबको? Hello? Yes. Okay. Clear. Good. So dhan is clear. Now we can look at, yes. Anybody? Anybody wants to share? Okay. So having understood dhan, though it was discussed in the last session, I thought I will make it clear because there were some discussions that some people may not have understood it. But now if you have understood, what is the exact significance of dhan? भगवत गीता में भी दान, तीनों तरह के दान जो आपने बताया है वो भगवत गीता में 7वें अध्याय में पूरा वर्णन है। अच्छा, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक, तामसिक। ये दान में भी है, ये कर्म में भी है, ये वचन में भी है, हर एक में है। ये हर एक का डिफरेंशिएशन में दिया हुआ है इसमें कि सेवा में भी है। तो हर एक जगह पे ये तीन गुणों को बताया गया। यज्ञ, दान और कर्म तीनों का अलग अलग परिभाषित किया, बिल्कुल बिल्कुल किया हुआ। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। एब्सोल्युटली राइट सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो दान का कैटेगराइजेशन बहुत जरूरी है। सो व्हेनेवर यू आर गिविंग इन लाइफ, यू शुड बी क्लियर व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हेन यू आर डूइंग इट। तो चैरिटी इज सेल्फलेस, विच इज निष्काम। निष्काम दान में आएगा। तो अगर आप गुप्त दान दे रहे हैं तो वो निष्काम दान में आएगा। लेकिन अगर आप कुछ रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, maybe any kind of returns that you are expecting, then it becomes a rajasic, which is also good, which is also okay. क्योंकि आपने पुराने जमाने में भी सुना होगा, राजा महाराजा जो होते थे। हेलो, कैन आर यू एबल टू हियर मी? आवाज आ रही है मेरी? यस। तो वी मस्ट हैव, यू मस्ट हैव हियर्ड, शास्त्रों में भी हमारे कहा गया है, राजा महाराजा पहले कई जगह के यज्ञ करते थे, है? जैसे रामायण में भी बताया गया हुआ है, अश्वमेध यज्ञ किया था उन्होंने। तो ये अश्वमेध यज्ञ क्या है? ऑब्वियसली यू हैव समथिंग इन रिटर्न, दैट इज व्हाई यू आर डूइंग ए यज्ञ। पुत्र प्राप्ति के हेतु यज्ञ करते हैं। तो यू वांट ए चाइल्ड, सो दैट्स व्हाई यू आर डूइंग सम यज्ञ। यज्ञ का मतलब कुछ आहुति दे रहे हो आप, है ना? तो कुछ यज्ञ में आहुति की सामग्री होती है, पूरा यज्ञ, पूरा होम करते हैं, एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग ए रिजल्ट। तो ये सब राजसिक है, ये समझना है। राजसूय यज्ञ बोलते थे, अश्वमेध यज्ञ बोलते थे, राइट? So all these are rajasic. So you can always do rajasic yajna or rajasic दान, it is okay. पर निषिद्ध कर्म नहीं करना है, यानी कि तामसिक दान नहीं करना। That is what you need to take care. Is that okay? Clear everybody? Is that clear? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो। आप सात्विक कर सकते हो दान, राजसिक दान कर सकते हो, क्योंकि राजसिक हमारे शास्त्रों में भी कई जगह आपने पढ़ा होगा, राजा महाराजा जो होते थे राजसूय यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे, पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करते थे। तो ये सब क्या था? ये सब राजसिक है। दैट मीन्स विथ सम डिजायर्स इन माइंड यू आर डूइंग सम एक्ट ऑफ गिविंग। क्लियर? माय पिक्चर इज फ्रोजन, सो आई कांट से वेदर यू आर एबल टू हियर मी और नॉट। दान आप जिस तरह से दोगे, वो दान का रिजल्ट लाइफ में उसी तरह से ही आएगा जो भी आपके इंटेंशंस होंगे। दैट्स व्हाट शशि वाज शेयरिंग। आई थिंक शशि इज बैक, एंड शशि, ओवर टू यू। Yes. So I kept on saying, then I realized that the whole picture is frozen. So I don't know what all you heard, but I'll just repeat it. So when you are doing a sattvic दान, it is totally selfless to the tune of charity or anonymity. Correct? तो गुप्त दान देना और किसी को चैरिटी के हिसाब से कुछ देना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ये सब सात्विक दान में आएगा। करेक्ट? राजसिक दान में जैसे आपने सुना होगा पहले भी, जो राजा महाराजा होते थे राजसूय यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे, पुत्र प्राप्ति के हेतु यज्ञ करते थे। तो ये सब क्या था? ये सब राजसिक है। दे हैव ए पर्टिकुलर डिजायर एंड देन दे डिड इट, एंड इट वाज वेरी फेमस। इट वाज डन इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। तो ये गलत नहीं है,
तो राजसिक दान जो है वो गलत नहीं मानेंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड उसके रिटर्न्स उसी हिसाब से मिलेंगे जो आपकी इंटेंशन है। तो ऑब्वियसली बेस्ट क्या है? निष्काम, सात्विक। सेकंड बेस्ट जो होगा वो होगा राजसिक, राइट? डिजायर्स के साथ है, बट यस यू कैन फुलफिल योर डिजायर्स। सो मंदिर में जाके अगर हम इतने सोमवार व्रत रखेंगे या इतने मंगलवार ये रखेंगे या शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाके इतने हफ्ते अगर हम ये पूजा करेंगे तो बहुत सारे विघ्न टल जाएंगे, हमको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो वो सब ठीक है। तो डर के मारे नहीं, you need to fulfill a desire and you are doing it, so this is राजसिक। बट अगर डर के मारे कर रहे हो तो वो तामसिक हो जाएगा, क्यों? इमोशन उसमें नेगेटिव हो गया। अगर रिजल्ट्स किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं तो वो तामसिक हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? सो तामसिक दान बिल्कुल निषिद्ध है। निषिद्ध मीन्स प्रोहिबिटेड। नाउ एवरीबडी क्लियर कि आपके कर्म योग में कर्म कैसे होने चाहिए? एवरी कर्म इज ए गिविंग, एक्ट ऑफ गिविंग, right? So next thing after Dan, what is mentioned is Purusharth. This is actually the topic that we were to discuss today, right? So what is Purusharth? Purusharth is present karma. मेरे अभी जो क्रियामान कर्म बोलते हैं उसको पुरुषार्थ के नाम से कहा गया है। लेकिन पुरुषार्थ इंक्लूड्स नॉट ओनली द कर्मा बट ऑल्सो द एनर्जी बिहाइंड दैट कर्म, विच मीन्स आपका पुरुषार्थ में आप बोलेंगे आपके एक्शंस में कितनी इंटेंसिटी है। Our efforts. एफर्ट्स, ऑब्वियसली एफर्ट्स, बट एफर्ट्स के पीछे आपका इमोशन क्या है, आपकी कितनी डेडिकेशन है, कितनी कमिटमेंट है, करेक्ट? ऑल दिस विल बी पार्ट ऑफ पुरुषार्थ। सो कितना आपका जोश है उसमें, ये सब चीजें भी आ जाएंगी। एंथुसियाज्म कितना है, आपका विश्वास कितना है, सो एवरीथिंग कंबाइंड इज कॉल्ड पुरुषार्थ। हाउ मच आर यू रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर दैट एक्शन, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ इज ए बिगर कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर कर्मा। उस कर्मा को करने का आपका इंटेंशन क्या है, उसके पीछे के इमोशन क्या है, और उसके रिजल्ट को भी आप अकाउंटेबल मानेंगे। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट ऑफ दैट, देन द होल थिंग इज मेंशन्ड एज पुरुषार्थ। ओके, so let us understand purusharth is often explained in terms of, or rather another term is explained along with it, which is called prarabdha. So let us first understand what is prarabdha and what is purusharth. So today whatever action I am doing now, this is my present purusharth, and this is obviously in line with some situation I am facing in life, that is called the prarabdha, right? तो मेरे जितने भी कर्म हैं वो एक सिचुएशन बन के मेरी लाइफ में आ रहे हैं, ये प्रारब्ध है। और सिचुएशन के सामने मैं कोई एक्शन ले रहा हूं, ये मेरा पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ शुड बी ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, इंटेंसिटी वाइज, यानी कि फुल इंटेंसिटी के साथ एक्शन करूं, और पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ, यानी कि सत्य और धर्म के मार्ग पे चलते हुए पूरे ऑथेंटिकली मैं उसको एक्शन लूं। तो ये पुरुषार्थ की क्वालिटी होती है। क्लियर है ये? The situation is prarabdha and your efforts or present karma is called purusharth. Now let us go back a little. Present situation जो बनी ये कहां से आई? मेरे पास्ट कर्मा से, करेक्ट? तो प्रारब्ध जो है एक्चुअली में क्या है? पूर्व पुरुषार्थ का रिजल्ट है। जो पुरुषार्थ मैंने पिछले जन्म में किए या बचपन में किए, उसके जो रिजल्ट सिचुएशन बन के आ रहे हैं वो प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध एज सच इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट? माय अर्लियर पुरुषार्थ। तो लेट अस टॉक ऑफ पास्ट पुरुषार्थ एंड प्रेजेंट पुरुषार्थ। पास्ट पुरुषार्थ की वजह से प्रारब्ध बना, और उस प्रारब्ध के चलते अभी मैं प्रेजेंट एक्शन ले रहा हूं, यानी कि प्रेजेंट पुरुषार्थ कर रहा हूं। एवरीबडी क्लियर टिल नाउ? राइट? नाउ टेल मी, अपना जरा थॉट प्रोसेस ऑन करिए और मुझे ये बताइए, टुडे in the present life, are you more evolved today than you were 2 lifetimes before? Yes or no? Do you think you are more evolved today than you were 2 lifetimes before? Yes. Yes? Pakka? Everybody clear? That means उस 2 जन्म पहले जो मैंने पुरुषार्थ किया उसकी वजह से ये प्रारब्ध बना, वो प्रारब्ध ज्यादा स्ट्रांग होगा या मेरा पुरुषार्थ ज्यादा स्ट्रांग होगा?
आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रारब्ध ज्यादा स्ट्रांग होगा या पुरुषार्थ ज्यादा स्ट्रांग होगा? व्हाट इज? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ प्रारब्ध। ज्यादा स्ट्रांग होगा, राइट और रॉन्ग? बिकॉज आई हैव इवॉल्व्ड माई सेल्फ इन द लास्ट 2 लाइफ टाइम्स। वो कर्म मेरे उतने इवॉल्व नहीं होंगे, लेकिन आज का कर्म डेफिनेटली विल बी मोर इवॉल्व देन द लास्ट वन. So whether you should be scared of the present situation or you should be saying come on, let us play. क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आ जाओ. Come on. Come on, let's play. Life, चक I'm दे। on. Game is on. Let's play. Why? Because I'm very sure मेरा आज का पुरुषार्थ मेरे 2 जन्म पहले या 1 जन्म पहले या 10 जन्म पहले के पुरुषार्थ से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है. I have evolved. Yes or no? So this is the wisdom of Purusharth that we have to first imbibe in ourselves. सिचुएशन जो मर्जी हो, वो मेरे पास्ट कर्मों का ही नतीजा है. वो प्रारब्ध मुझ पे हावी नहीं हो सकते, नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए. अब मैं अपना पुरुषार्थ आज मैं डिसाइड करूंगा. कैसे डिसाइड करोगे? इसके लिए कुछ पिलर्स हैं. तो जो महर्षि ब्रह्मर्षि जो हैं वशिष्ठ, वो राम जी को जो सिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि तुम्हारे रघुकुल में 4 पिलर्स, 4 स्तंभ हैं जिनके ऊपर टिका हुआ है. I'll give you some background and then we will see what are the pillars that we need to take up in our life in this lifetime right now. Clear है? Everybody okay with this? तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बता रहे हैं राम जी को कि तुम्हारे रघुकुल में जो 4 स्तंभ चले आ रहे हैं, वो सबसे पहला है वचन पालन. प्राण जाए पर वचन न जाए. तो ये एक बहुत बड़ा एक स्तंभ है कि अगर प्रॉमिस कर दिया तो फिर जान चली जाएगी, लेकिन वो वचन नहीं तोड़ सकते. ये एक रघुकुल की रीत है. ये राजा हरिश्चंद्र के जमाने से चली आ रही है. तुम उसके वंशज हो तो you can't even think of, you can't even dream of breaking the word or the promise that you have given. तो ये उसका एक स्तंभ है. दूसरा स्तंभ जो बोलते हैं वो है स्वधर्म. स्वधर्म मीन्स व्हाट इज द धर्म ऑफ योर लाइफ टाइम. इस लाइफ टाइम में आपका धर्म क्या है? तो ऑब्वियसली राम जी को क्लियर है, क्षत्रिय हैं, राजकुमार हैं, तो क्षत्रिय धर्म का पालन करेंगे. पुत्र हैं तो पुत्र धर्म का पालन करेंगे. तो ये आपके स्वधर्म में आ जाता है. तो इज वेरी क्लियर कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करना है, उनकी सेवा करनी है, और क्षत्रिय धर्म का पालन करना है. इसके बाद तीसरा स्तंभ है राजधर्म. राज्य के लिए. वो ऑब्वियसली राज्य के लिए तब आएगा जब वो युवराज बनेंगे या राजा बनेंगे. तो वो अभी एबेंस में है, अभी एप्लीकेबल नहीं है. बट विद इन दैट कॉन्टेक्स्ट whatever he can do for the people in the state, he will do that. And fourth is, which is governing for all the 3 pillars, which is tyag. Okay, so tyag means you can say the sacrifice or be selfless. जो हमने अभी दान की बात करी, तो सारे कर्म में आपके त्याग आ जाएगा. तो वचन पालन में भी त्याग को ध्यान में रखना है, स्वधर्म में भी त्याग का ध्यान रखना है, राजधर्म में भी त्याग का ध्यान रखना है. तो सैक्रिफाइस और सेल्फलेस सर्विस इज द हॉलमार्क ऑफ ऑल द एक्शंस. तो ये 4 स्तंभ हैं जो योग वशिष्ठ में समझाए गए हैं. राइट नाउ दिस इज एप्लीकेबल टू द प्रिंस राम. नाउ इफ वी वांट टू लुक एट आवर पुरुषार्थ today in this lifetime, in the face of the prarabdha, the life situations that we are facing, what will be the pillars that you will be looking at that will define your purusharth? Now obviously we don't have to pick up the same purusharth. वो उनकी लाइफ थी, हमारी लाइफ अलग है. आज की डेट में हम देखेंगे हमारे पुरुषार्थ क्या है और उसका पिलर क्या है. और वो एक बार आपने पिलर बना दिया, देन ब्रेकिंग दैट विल बी लाइक यू कैन लूज योर लाइफ. आपकी लाइफ को कोई मतलब नहीं रह जाएगा. तो सोच समझ के पिलर बनाना है पूरी टेस्टिंग के बाद, और उसके बाद उस पे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा. दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉट
by the Brahmarshi Vasishtha. So ready for the Gyan? Yes. So let us do some introspection. अपनी life में देखते हैं. So I will share what I have made as my pillars in my lifetime, for this lifetime. जो मैंने अपने pillars बनाए, I will share that. Maybe something will open up for you and then you can share that. So that will be the session for today. Ready for it? Right. तो मैंने अपने लिए जो बनाया, of course this has come with a lot of introspection. This is the 5S. 5S because I have taken the S from my name. So 5S for me is the 5 pillars which I have created for myself. At any point of time, one of these 5 pillars will guide my actions. Then my Purusharth will become absolutely rock solid and cannot be deviated from the path of Dharma or Satya. So the first pillar for me is Santosh, contentment. I am always contented with the results, but not with the actions. I always keep improving my level of commitment and actions, but I am always contented with the result. Santosh, my first pillar. Second, sadhana. Whatever my spiritual practices are, I will follow that come what may. Recently I was on a 2-day vacation break, and I thought, chalo relax karenge family ke sath. But my inbuilt system is so strong. 5 o'clock my eyes would open up, and then I would start doing my meditation for 1 hour. Then I will go out, and it was quite chilly, by the way. काफी chill था वहाँ पे. 1 घंटा फिर walking करता था मैं, प्राणायाम करके आता था, and then 7:30 I'll be back. So I couldn't stop myself because my sadhana is so inbuilt into me that I can't live without that. Right? So sadhana is very, very, something like has to happen. Then satsang, truth, company of truth, with people who are like-minded, in a group which is like-minded, or simply following the path of truth, which is divine love, divine light, divine wisdom. So that is the third pillar. Okay. So we have Santosh, contentment. Second is sadhana. Third is satsang. Fourth, seva. Now again, as I said, seva is of 3 categories. So I will do the sattvic and I will do the rajasic, and I will never do the tamasic. Very clear. तो जो भी मैं सेवा कंट्रीब्यूशन लोगों के लिए करता हूँ, या तो वो बिल्कुल चैरिटी के लेवल पे होगा, या फिर बिल्कुल फ्री होगा, या फिर विद डिजायर्स के साथ, यानी कि विद एनर्जी एक्सचेंज, जो कि मैं हीलर हूँ, हीलिंग करता हूँ तो एनर्जी एक्सचेंज लेता हूँ, तो एनर्जी एक्सचेंज के साथ, विच इज ओके. सो सात्विक हो या राजसिक हो, इट इज ओके फॉर मी, बट आई विल नॉट डू एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू तामसिक, नो मैटर व्हाट. जितना मर्जी मेरे को प्रॉफिट मिले उसमें, तामसिक काम मैं नहीं करूँगा. और सत्संग का मतलब है कि जो अधर्म के रास्ते पे है मैं उसका साथ नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए. They are out of my life. Earlier I used to compromise, but now no compromise. अगर कोई अधर्म के रास्ते पे है तो मैं उसका साथ छोड़ दूंगा, चाहे वो जो मर्जी हो. क्लियर? देन द फोर्थ हो गया सेवा. तो सेवा में सात्विक और राजसिक. एंड फिफ्थ इज स्वाध्याय. At any point of time, the only thing that I am interested in is doing introspection into my life. मैं पर अध्याय नहीं करता और सिर्फ कोचिंग के टाइम पे करूंगा जब वो मेरा कर्तव्य है. When I am on duty to coach somebody, then I will look into others' life. Otherwise, I will not look into others' life. So अध्याय is only for introspection on my life. So I accept the people with their flaws, but I will never accept myself with my flaws. I will always work to iron out the flaws in me. अपने विकारों के साथ मेरा जंग चलता रहेगा, पर और लोगों को मैं एक्सेप्ट करूंगा, वो जिन भी विकारों के साथ आ रहे हैं, आई विल एक्सेप्ट. उनकी जर्नी है, आई एम नोबडी टू जज देम, बट आई विल सपोर्ट देम इन विचएवर वे आई कैन. So that is a short capsule. I don't want to make it very lengthy one, but I hope I am clear on the pillars on which I am working. Now, having said that, you don't have to be very, very strict with yourself, because we are all WIPs, है ना, work in progress है.
बट ये 5 क्वालिटीज हैं, ये 5 पिलर्स हैं जो मेरे को गाइड करते रहेंगे हर एक्शन में। अब कितना परफेक्ट होऊंगा दैट विल डिपेंड ऑन माय स्पिरिचुअल जर्नी एंड दैट विल आल्सो बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ फास्ट आई विल रीच सेल्फ रियलाइजेशन। बट दीज आर द 5 pillars for my Purusharth today. How many of you could connect with it? Good. So now let us have some discussion on Purusharth in your life. आपकी लाइफ में पुरुषार्थ के पिलर्स क्या बनाएंगे आप? If you can share even one, but I will suggest you later on pick it up as 4 or 5 because at any point of time any one karma has to be guided by it. ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो पिलर्स के साथ नहीं जा रहा है, बिकॉज उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा. Any action you do should be guided by one of the pillars. So make as many pillars as you can. It will balance you much better. Yes? Okay, let's have some sharing now. आज का ज्ञान इतना ही था. We still have 15 minutes, so I will take some sharings now. And first of all, any questions? Any doubts? Any question? Yes, Rajiv, go ahead. Yeah, no, it's not question. Actually, I'm just mentioning about my Purusharth. Yeah, go ahead. I have manifested and I've been working on that. First is किसी का नुकसान ना हो मेरी वजह से, और दूसरा इसको एक वर्ड में बोलना पड़ेगा राजीव. Then only it will become real for you. Okay, so it is how I say. आप बताइए, आपका पुरुषार्थ है, आप ही पिलर बनाएंगे. इसके लिए एक वर्ड क्या हो सकता है? किसी का नुकसान ना हो मेरी वजह नुकसान से. नहीं करोगे तो क्या करोगे? हेल्प. Let me guide you. नुकसान नहीं करूंगा is what? Is not doing negative. What is the positive that you're going to do for them? सेवा. सेवा. Good. So सेवा is the first पुरुषार्थ का पिलर बन गया. We have to be careful. हाँ? Careful also. We should be No. careful not to harm anybody. वो आपके लिए होगा सर. वो अपना ढूंढेंगे. सबको अपना अपना ढूंढना है ना. उन्होंने सेवा बोला तो सेवा इज ओके. तो सेवा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर, है ना, पुरुषार्थ का. बहुत बढ़िया संजय राजीव. नेक्स्ट. दूसरा अहिंसा. ओके नॉनवेज कभी नहीं खाऊंगा. ओके ओके. या और थर्ड अहिंसा, नॉनवेज नहीं खाऊंगा इज ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट बाय द वे. मतलब अहिंसा मतलब अहिंसा मैं का ये हो किसी गया. को मारने की सोचूंगा भी नहीं, बोलूंगा भी नहीं, करूंगा भी नहीं. मनसा वाचा कर्मणा, राइट. तो अहिंसा इज वेरी पावरफुल. नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ कैन मेक यू अ महात्मा. हाँ. You need to understand that. So non-violence is very, very profound, but make it expand it. Not only about eating, it's also about talking, it's also about thinking, and it's also about hitting a cockroach, I would say. Cockroach को भी नहीं मारूंगा. ठीक है? Yeah, ahimsa is very good. So seva and ahimsa 2 हो गए. और this is by the way for everybody, huh? If you have similar ones, you should change it. It should be one word. It should be defined in one word. Otherwise, you will forget it. And it should be like you have to breathe it out every day. Breathe in में आपके हर breath में होना चाहिए. So Rajiv, you got 2. Very good. Third Seva. one is santosh, as you said, self-content. Not because I said you have to pick it up, because you said. not because क्योंकि मैं खुद भी काफी आत्मसंतोषी हूँ. Very good. जो मिल रहा है उसमें I try to be very contented. Very good. So you said seva, then you said ahimsa, and then you said santosh. Very good. बहुत बढ़िया. Anything else that calls you? That's it. Thank you. That's good. Very good. Keep thinking about it. ठीक है? All your actions should be now governed by only by these 3 pillars, nothing else. अगर और कोई पिलर है तो ढूंढो और उसको लगाओ साथ में. Very good, Rajiv. Great effort. Let's acknowledge Rajiv. Yes. Anybody else who would like to say the pillars of your Purusharth? सर सारे तो आपने बोल दिए, अब हम क्या बोलेंगे? अरे तो आपके लिए अलग है, सेम क्यों नहीं हो सकता? आप हमारे भी वही है. आप बोलोगे अहिंसा और सत्य तो महात्मा जी ने बोल दिया, गांधी जी ने. अब हम क्या बोले? आप भी लो ना. किसने मना किया? किसी को कॉपीराइट थोड़ी ना है. ये तो हमारे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने सिखाया हुआ है.
Sir, my first pillar would be like my dharma. वही I चीज। have to. I am a very like मेरा धर्म है जो as a mother, as a daughter, as a sister, as a caretaker. That is my first pillar. You say duty. Here Yeah, my you're duty. using धर्म ऐसे ड्यूटी, कर्तव्य। Yeah, my कर्तव्य. हाँ, तो अपना कर्तव्य पूरा करूंगी। वेरी गुड। कर्तव्य है पहला आपका पुरुषार्थ। ओके, नेक्स्ट। Next, of course, seva, contentment, everything is there. नहीं नहीं, एक एक करके बोलना है। Okay, to Second remain is happy always. To remain contentment. happy always. Okay, so Contentment. कर्तव्य हो गया, कंटेंटमेंट हो गया। थर्ड, Yeah. Sacrifice. सैक्रिफाइस की जगह पे और कुछ बोलो। सैक्रिफाइस तो पुराने जमाने में राजा महाराजों के लिए बोलते थे। दे कुड चॉप आउट देयर हैंड एंड To गिव इट serve others. To to serve. सेवा Seva. हो गया। सेवा तो आपने बोल दिया ना, 3 हो गए आपके। हाँ, और Contentment. Seva. बोलो बोलो। सर अभी 3 ही समझ आ रहे हैं। हाँ ठीक है, 3 तो लिखो ये फटाफट, जो जो बोला है फटाफट लिखना है। हाँ, इट विल बिकम रियल फॉर यू। गुड। तो Okay. 3 क्या क्या लिखे आपने? पहला आपने बोला कर्तव्य, पहले कर्तव्य. Yeah. दूसरा बोला आपने कंटेंटमेंट, सेवा. Yeah, तीसरा बोला contentment. सेवा। सेवा. ठीक है, गुड। ओके, गुड, टेक इट, नोट डाउन द 3 फास्ट। You should not forget it. I will ask you next time. You should not forget it. Okay. And all your Okay. actions should be guided by these pillars now. इस पूरे लाइफ टाइम में जो भी एक्शंस हैं वो इन 3 पिलर्स के बेसिस पे ही होगा। Then only they will become existing in your life, and that will take you to the path of self realization. This is the golden words of Brahmarshi, huh? So don't take it lightly. अगर आप अपने पिलर्स के बेसिस I पे can- सारे कर्म करोगे तो आपका पुरुषार्थ इतना पावरफुल होगा इंटेंसिटी और ऑथेंटिसिटी में कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता बहुत आसानी से मिल जाएगा। दैट इज व्हाट द ट्रूथ इज। I can add one more, good karmas. गुड कर्मा का मतलब कुछ नहीं होता। गुड से क्या मतलब है? डिफाइन। पिलर चाहिए ना कर्म के लिए। कर्म को गुड सात्विक कर्मा के कर्म. लिए ही तो आप पिलर सात्विक बना कर्म. रहे हो। हाँ, सात्विक कर्म. नहीं, you have to pick up a quality which will, all this is only for understand, आपके कर्मा को गुड कर्मा या सात्विक कर्म बनाने के लिए ये पिलर्स बना रहे हैं। तो पिलर वो नहीं हो सकता ना, वो तो रिजल्ट है। इन पिलर्स की वजह से आपके कर्म अच्छे होंगे, आपके कर्म सात्विक होंगे। you have to understand. Okay, so don't be in a hurry, take your time, make it and live your life on that. Yes, let's acknowledge Gunjan ji and Rajiv. Very good. Anybody else who would like to share? Sanjeev, you want to share? Okay, go ahead. I don't know, just sitting along with and thinking Allah, स्वाध्याय करते करते थोड़ा सा जो आया, I'm sharing and just help me so that that will guide me. Am I going right or I need to improve? So first one आया मेरा योगदान, contribution. The contribution. Perfect. Then I wrote second as ज्ञान सेवा. Perfect. बहुत बढ़िया. ज्ञान सेवा. Imparting wisdom to people. हाँ. Yes. Third आया समभाव. ये थोड़ा explain कर रो. So looking everything or rather everybody with the similarity, equanimity rather than differentiate. Okay. Great. समता की भाव से. समता के भाव से. हाँ, ठीक है. समभाव. समता, समभाव. Very ये good. चलेगा? बहुत बढ़िया है. बहुत अच्छा है. Perfect है. Then एक आया, I have written जो दिमाग में आया, I don't know is it good enough, number कम है ज़्यादा, I don't know. Detachment. बहुत powerful है. Non-attachment. Detachment. And then जो एक word मैंने गुंजन से पकड़ा, that is about कर्तव्य. Still trying to connect with it, but मुझे अच्छा लगा, तो I'll do more स्वाध्याय on that. Yes, absolutely perfect. बहुत बढ़िया संजीव. It's all wonderful. Thank And you. you can relate to कर्तव्य like you are playing different roles. In every role there is a purpose. You're fulfilling that purpose. तो पति धर्म का पालन कर रहे हो, पुत्र धर्म का पालन कर रहे हो, like that. So whatever you are doing is fulfilling the duty. Absolutely right. Great. Wonderful.
एंड इसको जितना ज्यादा रखोगे उतना अच्छा है, बिकॉज वन ऑफ देम विल डेफिनेटली गवर्न योर एक्शन। तो डोंट बॉदर अबाउट 4 है, 5 है, 6 है, मेरे को और मिल जाएगा कोई अच्छा तो मैं वो भी डाल दूंगा उसमें। बट राइट नाउ आई हैव गॉन with 5S. This 5S is what I wanted to share as the pillars of my Purusharth, right? All right, good. Amit ji is introspective. हाँ, ढूंढ रहे हैं, ढूंढिए। उदय चंद जी कुछ शेयर करेंगे सर? सिल्विया जी? मैं वो सब पुरुषार्थ को पहले से ही 4 भागों में परिभाषित कर रखा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वो अलग है सर, वो अलग है। वो आपके पुरुषार्थ, चार लाइफ स्टेजेस जो हैं, मैं समझ गया आपकी पुरुषार्थ बात। का मतलब आपका पर्पज ऑफ लाइफ। मैं समझ गया सर, वो मैं आपकी बात समझ गया। शास्त्रों के हिसाब से हमारे 4 गृहस्थ आश्रम जैसे हैं, 4 आश्रम हैं, और 4 आश्रम के साथ मिलते हुए 4 अपने पुरुषार्थ के स्तंभ बनाए हुए हैं, वो अलग है। वही पुरुषार्थ। वो तो पूरे यू कैन से ह्यूमन बींग्स के लिए है। इसके पालन की विधि ऑलरेडी अष्टांग योग, अष्टांग में यम नियम में सारे आ जाएंगे जो आप बता रहे हैं। सर वो सब सही है, पर यहाँ पे कुछ और बात हो रही है, वो नहीं, ज्ञान की सत्य, बात हो रही है। अहिंसा। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि आपके हर एक्शन को गवर्न करने के लिए कौन से पिलर्स हैं, बस। नहीं, वो यम नियम दोनों मिला के पूरे पिलर हो जाते हैं, 10 पिलर। तो आप 10 रखिए, बट बोल दीजिए मैं 10 पिलर्स पे काम कर रहा हूँ। वही सत्य, अहिंसा, तप, अस्तेय, परिग्रह, संतोष, शौच, तपस, ईश्वर प्राणिधान। वेरी गुड। तो यम और नियम के जो 10 हैं आपके, आप उस पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। यम नियम, एवरीबडी नोज दैट, वी हैव डन दैट एक्टिविटी लॉन्ग टाइम बैक, है ना? हम काफी बार, 2-3 बार कर चुके हैं। यम नियम में सारे आपकी जो क्वालिटीज हैं, पिछली बार भी चर्चा हुई थी, इसमें इंटीग्रिटी, जो मतलब आचरण और व्याकरण एक होना चाहिए, ये मेरा मुख्य वाक्य है। बिल्कुल बिल्कुल है जी, बिल्कुल सही। तो यम के 5 पॉइंट्स, नियम के 5 पॉइंट्स, दे आर वेरी वेरी पावरफुल। यू कैन डू दैट, करेक्ट, एब्सोल्युटली ग्रेट। Yes, anybody else who would like to share? आपके 5 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स जो भी आपको ध्यान में आ रहे हैं, एटलीस्ट पिक अप वन विच इज वेरी क्लोज टू यू, इट विल गाइड यू टू पिक अप मोर। So I want everybody to share at least one, एक पिलर जिसके बेसिस पे आप अपने पुरुषार्थ को प्यूरिफाई करेंगे। And you have to understand, पुरुषार्थ is your present karma based on prarabdha, which is the life situation. Yes. So who would like to share? We have another 5 minutes to close. Anybody else who wants to share? ज्ञान इतना ही था, बाकी मेरे को शेयरिंग लेनी है, so that I know what you're taking away from the session. So anybody else who would like to share? अनिरुद्ध जी कुछ शेयर करना चाहेंगे? अनिरुद्ध जी का पुरुषार्थ का पिलर मैं अभी बता देता हूँ। हाँ, अनिरुद्ध जी आ गए, चलिए गुड। बताइए सर, आपका एक ही पिलर काफी है, बताइए। आप वही बोलेंगे, मुझे मालूम है। सर मेरा जो पहला हेल्थ है, हेल्थ नहीं सर, एक्शन दूसरा बताना है जो ना। है नॉलेज, विजडम, और थर्ड मेरे को आवाज नहीं आ रही है, किसी को आवाज नहीं आ रही है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वननेस में ओके, और रहना है और उसको आगे बढ़। सर आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है मुझे, पर मेरे को जो समझ में आया, आपने बोला है हेल्थ बोला, देन फाइनेंशियल सिक्योरिटी बोला, फिर वननेस बोला। ठीक बोला है आपने, यही बोला है या कुछ और बोला है? की आवाज नहीं आ रही। ओके, बट मैं जो जानता हूँ अनिरुद्ध जी यही बोलेंगे, वननेस। हाँ, अनिरुद्ध जी का हर एक्शन का एक ही पिलर है, वननेस, वननेस विद द डिवाइन। तो अनिरुद्ध जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, बट I understand and I accept that pillar of yours which is oneness. Absolutely great. तो यूनिटी कॉन्शियसनेस और वननेस, यहाँ पे आप डिवाइन, सबके अंदर डिवाइन को देखते हैं, so that quality is good enough. Okay, yes, anybody else who would like to share? नीरू जी आ गए हैं? हाँ जी, बोल सकते हैं सर। अनिरुद्ध जी बोल सकते हैं। हाँ जी, मैंने बोल दिया था अपना। हाँ ठीक है, तो अभी आपकी आवाज क्लियर है, उस समय आवाज क्लियर नहीं थी, मैं इसलिए बोल रहा था। If you want to share something, you can do that. हाँ, बस मैंने ये 4 हैं जो मैंने अब आज ये मैंने नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, हम बाद में आपसे शेयर कर लेंगे।
ठीक है जी, थैंक यू, लेट्स एक्नॉलेज अनिरुद्ध जी, वेरी गुड। बोल दिया सर, ये 4 मेरे तो यही विचारों को भी मैंने वो किया है। हेल्थ है। यस सर। तो ठीक ये है किया है। सर, आवाज कट रही है, सुनाई नहीं दे रहा है, सो इट्स ओके, राइट। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? वीपी सिंह जी, प्रीति जी, धर्मेंद्र जी, सिल्विया जी, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? नहीं सर, आनंदित हूँ सुन के पूरा वार्तालाप। थैंक यू सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक पुरुषार्थ का पिलर तो बताइए, मुझे मालूम है आप तो। सर पुरुषार्थ का एक ही पिलर है, हमने तो देखा, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धिमान लोगों की संगति में रहो, सब कुछ ठीक होता रहेगा। सत्संग, संगति बोल रहे सत्संग, हैं आप, सत्संग मानूं आपका पॉइंट? ओके, संगति, सत्संग, बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा संगम, संगठन में रहो, तीसरा धम्मम। जब बुद्धिमान लोगों के संग में रहोगे, संगठन में रहोगे, धर्म अपने आप सुधरने लग जाता है। ठीक है जी, बढ़िया तो बढ़िया, बहुत सिंपल। बढ़िया वीपी सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ओके, एनीबडी एल्स who would like to share? Sylvia ji, anything that you want to share? What are you taking away from the session? Any pillar of excellence, pillar of पुरुषार्थ? आप म्यूट पे हैं सिल्विया जी, आप म्यूट पे हैं। आई एम ट्राइंग टू इंट्रोस्पेक्ट एंड सी कि कौन से पिलर्स मेरे हैं। आई कैन रिलेट टू लॉट्स, सम व्हाट संजीव सेड, गुंजन जी ने बोला सेवा के बारे में, ज्ञान देने के बारे में, लाइक helping out animals. There are so many, but I'm not able to put a word to them. So I'm Okay, still prospecting. so think in terms of duty. You are fulfilling your duty in many areas of your life, as a principal, as a person who is doing a business, right, or running a school. So you have a lot of duties that you are performing. So look at it that way. So duty could be one for that, and obviously you're doing a lot of seva. So Yeah. seva and duty is something that you can pick up right now. Rest you can think about it. So what I know about you, I know these two will be the strong pillars for you. Correct? What will social work come in? सेवा में ही आएगा ना। अच्छा, okay. अगर फ्री में कर रहे हो तो चैरिटी के फॉर्म में आ जाएगा। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एज ए इन रिटर्न, देन इट बिकम्स ए राजसिक डिजायर, विच इज ऑल्सो गुड। राजसिक सेवा, विच इज ओके। या तो निष्काम होगा या सकाम होगा, दोनों सही, नो प्रॉब्लम, राइट? ओके, लेट्स एक्नॉलेज सिल्विया जी, गुड अंडरस्टैंडिंग, थिंक मोर एंड यू विल ऐड मोर टू इट। प्रीति जी कुछ शेयर करना चाहेंगे? Actually, I am traveling today. Okay, I'm going to Mumbai. okay, take care. That's okay, that's fine. Right. Anybody else who has anything to share? Otherwise, we'll close the session for today. It's 2 minutes over time already. धर्मेंद्र जी कुछ शेयर करना चाहेंगे? कुमार रेशम जी, anything that you want to add? हाँ, मेरा ये एक प्रश्न है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो पिलर्स बता रहे हैं, क्या ये डिसिप्लिन या प्रिंसिपल्स से जुड़ सकते हैं? इसको हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी आइडिया इज दैट वॉट एवर एक्शंस यू आर टेकिंग इन लाइफ, वॉट जो भी आपके कर्म हैं, वो किसी ना किसी एक वैल्यू या गाइड प्रिंसिपल के साथ जुड़े हुए हों। दैट्स ऑल वी आर सेइंग। तो इसी को पुरुषार्थ के स्तंभ बताए गए। ठीक है जी। सो यू कैन पिक अप एनीथिंग दैट यू फील इज गवर्निंग योर एक्शंस। हाँ नहीं, क्योंकि जैसे कि महात्मा गांधी जी के जो रास्ते अपनाए थे, सिर्फ वो रास्ते हमें पता है, सिर्फ उनकी जो बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। तो ऐसा बात हो गई कि बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए दोस्त के बिना, तो है वो हो गया। सो आई जस्ट वांटेड टू नो इफ द प्रिंसिपल्स आर ओके इवन people doesn't like what they are saying. Sir, is it okay? You don't have to follow their life, you have to follow the life principles that they follow. तो वैसे भी वो उनका नहीं है। अगर हम देखें, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ इज नॉट समथिंग विच गांधी जी हैज एनी कॉपीराइट ऑफ। इट वाज मेंशन्ड बाय सेज पतंजलि लॉन्ग टाइम बैक, राइट? जैसे यम और नियम के जो 10 पॉइंट्स बताए उनमें से हैं ये। ठीक है जी। उन्होंने तो 2 ही पकड़े और वो महात्मा बन गए। आप 5 पकड़ो, आप पता नहीं कहाँ बन जाओगे। हाँ, जैसे कि अहिंसा बताए थे, सत्य बताए थे, लाइक सिंप्लिसिटी बताए थे, सेल्फ रिलायंस बताए थे, कंपैशन एंड सर्विस बताए थे। आपको कौन से गाइड करते हैं, आप वो पकड़िए ना। आपको हाँ कौन बिल्कुल। से लगता है कि आपके एक्शंस के लिए बहुत सूटेबल हैं, आप वो लीजिए। हाँ वो तो है।
और जो कुछ भी उन्होंने बताया वो सब तो बहुत बढ़िया ही है, हम सबको पकड़ चुके हैं इसमें। थैंक यू। Very good. बहुत बढ़िया. Let's acknowledge Dharmenji for that. If you're already following it, wonderful. That's all. I just want you to be aware of what are the guidelines or what are the guiding principles which are, it's like a shining star. That star is guiding your actions. Simple. Right? Then it becomes clear for you. और वो हमेशा आपके जहन में रहेगा कि हाँ मेरे को ये गाइड कर रहा है, मेरे को इससे आगे नहीं जाना, ये मेरा दायरा है. These are the pillars on which I am standing, on which my life is moving. Like that. Yes, everybody has shared, I suppose. Anybody who wants to share? Okay. So that was the wisdom of Yog Vasishtha. And just to do a quick recap, so Purusharth is very, very important for on the path of self-realization. And the more pillars you have for your Purusharth, the more balanced life you will be living on the spiritual journey, and you will be moving on that journey faster. So that is the wisdom of Brahmarshi Vasishtha as he is training the Prince Ram to become an Avatar Ram. Yes. And if you see, go through the teachings which Prince Ram picked up, so all the 4 pillars that he was taught on, they guided his actions throughout the life. वचन का पालन करना है, अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए he made that sacrifice of going to the Vanvas. It was not required. He didn't promise it. But then since he was following the footsteps of the 4 pillars, he said, अगर मेरे पिताजी की आज्ञा है तो it will be fulfilled. Like that. तो पुत्र धर्म का पालन करते हुए उन्होंने वो किया. तो if you see त्याग, all the 4 pillars were there right in his life, in all his actions. And that's what made him the Avatar Ram that he became. Yes. So look at those qualities which can propel your spiritual journey and take you on the path of self-realization faster. So that is wisdom for this session. Yes, Rajiv, you want to share something? Go ahead. Yeah, I just wanted to ask about, we have not talked much about prarabdha. So उसमें जो भी श्री भगवान राम के साथ हुआ, वो उनका प्रारब्ध था, लेकिन उसके लिए वो that was purpose of life, right? It was to show. Prarabdha is the life situation in the face of which you will take a decisive actions. That is your पुरुषार्थ. प्रारब्ध के फेस में ही आप पुरुषार्थ दिखाओगे. Okay. Prarabdha is what? Prarabdha is the purva, earlier purusharth, because of which that prarabdha has come into your life. Correct? तो किसी के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां होती है. That is because of the past karmas. Yes. That is the beginning of the understanding, right? परिस्थिति जो बनी है, प्रारब्ध जो बना है, वो पिछले कर्मों का ही नतीजा है. तो आपकी फाइट सिर्फ ये है कि आज का कर्म और पहले के कर्म, इन दोनों के बीच में आपको डिसाइड करना है. And since present karma you are more evolved, your present karma will be much more powerful than any of the past karmas that you have done before. So your prarabdha has no power in front of you right now. That is the wisdom you will get. क्योंकि प्रारब्ध जो भी है वो आपके पूर्व कर्मों के नतीजे हैं. पूर्व कर्म आप उतने इवॉल्व नहीं थे जितने आप आज हो. तो आज का आपका पुरुषार्थ डेफिनेटली पुराने पुरुषार्थ से ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा विल पावर के साथ है, ज्यादा इवॉल्व है. So you can handle any situation in your life without feeling helpless. That is the wisdom. And these pillars will help you to move ahead very, very with full power and freedom in your life. So that is the wisdom of Yog Vasishtha. So with this Gyan, we will close the session. Rajiv, is that okay with you, or you have any other question? Did I answer your question? All right, yeah, good. Yes. Thank you. Okay, let's acknowledge everybody who shared. So thank you very much for your participation. Let's acknowledge everybody. Great. So thank you for your time, and I hope this session was valuable to you. And enjoy your day, enjoy your great week. And next week we will come back with a new topic and with a lot more discussions. Till then, Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Bye-bye. Take care. Good night.